हमारा आज इवेंट हुआ था जिसमें हमने जेकेएस के 2022 के टॉपर्स को लाया था. वी हैड अराउंड 50 selections. All these candidates were associated with Quintessence. तो उनका हमने आज एक सेमिनार, एक इवेंट कराया जिसमें हमने प्राइमरली जो हमारा फोकस था इस सेमिनार का या इवेंट का, दैट वाज टू फोकस ऑन थिंग्स जो कि चेंजिंग स्ट्रेटजीज है यूपीएससी या जेकेपीएससी के एग्जामिनेशन की. चेंजिंग एग्जाम के पैटर्न के साथ हमें कैसे अपनी नई स्ट्रेटजीज लेकर आनी चाहिए. सो दैट वाज द मेन इवेंट जिसमें हमने फोकस किया. वी हैड 6 स्पीकर्स रैंक 4 से लेकर रैंक 172 तक, तो काफ़ी सारे बच्चे आए थे. तो दैट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट. क्विंटेसेंस हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल इन द लास्ट 3-4 years, जिसमें हमने अलग अलग प्रोग्राम्स के ज़रिए, अलग अलग इवेंट्स के ज़रिए, अलग अलग वर्कशॉप्स के ज़रिए ये अवेयरनेस उठाने की या ये इशू उठाने की हमने एफर्ट्स डाले हैं, जहाँ पर हमने ये लोगों को समझाया है कि कैसे हमारी रिप्रेजेंटेशन एट द गवर्नमेंटल लेवल काफ़ी कम है. तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए Quintessence along with other institutes in Srinagar as well as in Jammu, we have institutes in all over Srinagar. वो सारे efforts कर रहे हैं ताकि ये vacuum जो है representation का, इसको fulfill किया जाए. So we are playing our role in that along with other institutes. We want to thank all of them उनके efforts के लिए, because of which the representation of students from the valley has increased in this year's examination. ये सारे बच्चे UPSC का मेंस भी लिख चुके हैं और जेकेएस में टॉप भी किया है अब, एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग हियर. उनको इसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, उसमें इंशाल्लाह टॉप करेंगे. तो इसमें से काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका अभी सितंबर में भी मेंस होने वाला है. सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी फॉर्चुनेट फॉर अस इफ दे क्वालिफाई दिस ईयर्स यूपीएससी एग्जामिनेशन as well. My name is Mohammad Huzaif Sheikzada. I am from Srinagar, Jammu and Kashmir. I did my BTech from NIT Srinagar in 2016. I have 4 years of experience in digital marketing. Post that, I started preparing for civil services, and this year I have acquired rank 4 in JKS 2022 examination. This event was basically about the type of felicitation we can say, and also the type of interaction with the students, to make them aware of our journey, what ups and downs we have faced during this journey, and to have an interactive session with the students, answer their questions, just to see how the strategy we used to qualify this examination, and Quintessence provided that platform to them. And I think it's very good thing for Kashmiri people that coaching centers are coming to Kashmir now, and people from our state get to know how we prepare. I met Tahlil sir last year when I gave the JKS interview. Since then, he has been a friend and a guide to me. I'll say that my optional strategy improved because of Tahlil sir. He introduced me to an IAS officer which improved me a lot. So he has been really a great friend in this journey of mine. Regarding Quintessence, I'd say that I feel privileged that such institutes are now coming to Srinagar. Not Srinagar, I'll say Jammu and Kashmir. And I think we should support such institutions where the students are provided the platform because it's cost effective. It's not easy for everyone to go to Delhi and study there. So I think Quintessence provides that platform to them, and I wish them best of luck. Just one message I'd like to give them: work hard for this examination. Yeah, it's not that difficult to crack this examination. It's just that hard work and luck was on your side. So start preparing. Be confident. Even if you get failures during this examination, don't get demotivated. Pull yourself up and again go hard for this examination. Inshallah, I believe that every aspirant will give his 100% and be consistent with this examination will qualify inshallah this examination. Thank you. My name is Moin Khan. I am from Banihal, Jammu and Kashmir. I have qualified JKS 2022 with rank 5 this year. And we were having an interactive session here at Quintessence Karanagar today. So it went very well. So there were many students, around 70-80 students here. So it was very nice to interact with them and answer their questions, whatever queries they had. Okay, so whenever I have to talk about Tahlil sir, it brings me a joy. Tahlil sir का कैसा है कि Tahlil sir he is really an inspirational person. ठीक है, so I went here to the institute for my mocks,
और तहलील सर ने बहुत हेल्प की ड्यूरिंग माई मॉक्स ऑल्सो, ठीक है. सो सर इज़ ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर मी. और आई वॉन्ट टू टेल ऑल द यूथ ऑफ कश्मीर की अगर इफ दे वॉन्ट टू गो टुवर्ड्स अ गुड पाथ तो दे कैन जॉइन दीज इंस्टीट्यूट्स, दे कैन हैव दैट आउटलाइन ऑफ देयर जर्नी. दीज इंस्टीट्यूशंस कैन फ्रेम इट फॉर देम. For all those aspirants, सबसे पहले I have already mentioned it, I would mention it once again. एक गोल सेट करना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना. इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर गोल सेट तो आप कभी इस पाथ पे आओगे ही नहीं, मतलब आपको नहीं पता चलेगा. दैट्स वन ऑफ द पॉइंट्स. एंड सेकंड पॉइंट इज दैट अब अगर आप उस पाथ पे आ चुके हो, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. 1 साल का मसला है एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ड्यूरिंग दोज टाइम्स. और ऑब्वियसली एवरीबडी इज गोना टेल यू दिस थिंग दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ठीक है. सो यू हैव टू डू इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. माय नेम इज़ फरहाना फारूक और मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हूँ. बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, मैं उससे साइड पे एक विलेज है चंदूसा, वहाँ से हूँ. और मेरा जो ऑप्शनल था वो साइकोलॉजी था और मेरा जो रैंक है वो 127 है. ये जो इवेंट है ये है सेमिनार किया हुआ था ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिले, गाइडेंस मिले कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या बाकी कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो यूपीएससी या पीएससी के एग्जाम्स के लिए. क्विंटेसेंस का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अच्छा रहा है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली. मेरा तो मॉक इंटरव्यू बहुत गंदा गया था, तो मैंने फिर उसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम मिला कि मैं उसमें इम्प्रूव कर पाऊँ. और तहलील सर ने भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया, बताया कि कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो देखो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि डेडिकेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है, तो मुझे यही फील हो रहा है कि आप अगर मोटिवेटेड हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो. आपको अगर विल पावर आपका है और आपको अपने आप पे ट्रस्ट है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. Okay, thank you. My name is Ilka Hassan. I hail from Sopor, district Baramulla. I have done my graduation from Hansraj College, Delhi University, and I have pursued my master's in environment. I have appeared in 2021 JKPSC interview, and this time I have secured the rank 84th in JKPSC. So this event was about sharing our journey, how we went through this study process during the preparation for the civil services, and just sharing our insights, whatever we learned through the course of this preparation. That was all the sharing process. This institution will surely guide a student to the best of its efforts, because during this preparation you really need guidance, and that too targeted guidance, so that you do not beat around the bushes. In the longer run it will help you to get into the list as faster as you can. So you should approach such institutions and get guidance properly. So I'll advise every aspirant that be confident. Do not feel like आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा. Just keep on going. Do not leave the preparation. Keep on revising. Keep on repeating. Even if you have to study the subject twice, thrice, even 20 times, just keep on going. Do not stop. My name is Abrar Aliwat, and this year I have qualified GKPSC CCE exams with the rank of 65. I am from Sonawari, and this was my second attempt in the JKPSC examination. Event was with the very few with new young aspirants, so it was more of an experience sharing, because strategies are available on the internet. So it was more about sharing our experiences. So I think it was more about sharing our experiences rather than anything else. Quintessence was kind of an important part of my journey. So Quintessence is doing an excellent job in the field of preparing for the civil service examination. So I would be thankful to the institution, especially Tahlil sir, who has been a great mentor to me. And I think Quintessence is, again, I would mention that Quintessence is doing a great job and a great service to the valley. Message would be kind of simple, that there's no substitute for the hard work, and work hard, and hopefully you will be in this list. I'm Hadia Bilal, a civil services aspirant. And here at Quintessence, I'm very immensely grateful to the whole team for organizing this very enlightening session, where we got to know, which we were not well versed with. We got to know a lot about the way to streamline our preparation for the whole process, because it's a very long journey. So we really got to know a lot about how to do that through the seminar that was conducted here. I'm very grateful to the whole team and to the toppers also for sharing their insightful advices with us. Assalamu alaikum. My name is Shakir, and I'm studying here in Quintessence since last 6 months.
आज हमारा सेमिनार था यहाँ पर और बहुत सारे केएस ऑफिसर आए थे यहाँ पर जिनकी रिसेंटली सिलेक्शन हुई थी और डेट वाज अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन। हमने बहुत सारा इंटरेक्शन क्वेश्चन आंसर किए यहाँ पर और इनके साथ मतलब यहाँ इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा, मतलब बूस्टनेस आ गई हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड जेकेपीएससी। और उन लोगों ने हमें स्ट्रेटजीज बताई, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज, क्योंकि ईच एंड एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रेटजी। उन लोगों ने बताया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड देन मेंस एंड देन इंटरव्यू एंड बहुत सारे क्वेश्चन हमने पूछे अकॉर्डिंगली। और आज हमें ये भी जानकर मिले कि एक इंसान को स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सी बुक सजेस्ट करनी है, कौन सी यूट्यूब चैनल और कौन सा सोर्स हमें मतलब कौन से सोर्स देखकर हमें स्टार्ट करना है। और इनके साथ हमें मतलब इंटरेक्शन करने के बाद बहुत कुछ आज सीखने को मिला जो हमको मालूम नहीं था। बहुत कुछ पता चला कि हमें क्या करना है, हमारी वीकनेस कहाँ पर है, हमें कहाँ से ये वीकनेस, कैसे हमें ये वीकनेस दूर करनी है और स्ट्रेंथ लानी है अपने आप में। और हमने ये जाना है आज इन केएस ऑफिसर से। और मतलब हमारा जो ये क्विंटेसेंस है यहाँ पर फैकल्टी बहुत अच्छी है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। मतलब दिस इज़ द गाइडेंस, हाउ कैन वी स्टार्ट, वेयर वी स्टार्ट एंड हाउ टू गो, वेयर टू गो। ये हमें यहाँ पर पता चलता है इन अपने फैकल्टी से जो क्विंटेसेंस है, स्पेशली मोमिन सर, तहलील सर। और यहाँ पर मोमिन सर है, ही इज़ अ वेरी हम्बल, जीनियस एंड जेन्युइन पर्सन जो हमको समझाता है, सिखाता है कि कहाँ कैसे शुरुआत करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से जाना है। तो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन फैकल्टी जो हमको यहाँ पर सिखाते हैं, समझाते हैं और जो हमको गाइडेंस देता है अकॉर्डिंगली। और ये क्विंटेसेंस जो है बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है श्रीनगर में और यहाँ पर फैकल्टी भी बहुत अच्छी है और स्टाफ ईच एंड एवरीवन। और आई विल सजेस्ट एवरीवन कम एंड फील एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महापारा है। यहाँ पर आज क्विंटेसेंस पे एक सेमिनार था, बहुत ही फ्रूटफुल लगा। बहुत इससे पहले भी यहाँ पर सेमिनार्स हो गए थे लेकिन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट क्योंकि हमें एक फेस टू फेस इंटरेक्शन करने को मिला टॉपर्स के साथ, स्पेशली हुज़ैफ सर और ये इल्का मैम। इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज हमें बताई एंड दैट वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर अस अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी थैंक क्विंटेसेंस फॉर दिस अप्रोच जो इन्होंने बहुत टाइम से हमारे लिए कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। मतलब जितने भी वैली में स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा या मे बी आउटसाइड द वैली उनको ऐसे जैसे सेमिनार से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ तनवीर अहमद। मैं आज यहाँ पे आया हूँ QCR में। यहाँ पे एक सेमिनार था जिसमें जो रिसेंटली क्वालिफाइड सिविल सर्विस JKPSC एस्पिरेंट्स थे उन्होंने क्वालिफाई किया था और वही यहाँ पे एज ए गेस्ट स्पीकर आए थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छी सी गाइडेंस की, अपनी स्ट्रेटजी हमसे शेयर की और ये एक इंटरेक्टिव एक अच्छा सेशन था हमारे लिए, एक फ्रूटफुल सेशन था हमारे लिए जिसमें इस इंस्टीट्यूट का भी ज़बरदस्त रोल रहा है। और बस यही एक बात है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन a right guide then follow the QCR. Thanks. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahtisham and I'm a student of Quintessence classes. I had joined this institute recently after I completed my 12th class. So today it was the seminar here where we interacted with the toppers of JKS and we get a lot of knowledge and also they encouraged us that how to study and how to make notes and how to appear for interview. And also we posed them a lots of questions regarding interview and regarding the journey, how they started their journey and how they are going and how they completed it and how they qualified the examinations. And I am also very thankful for the Quintessence classes and their teachers that they arranged this seminar for us and we get a lot of encouragement from them. And I thank Mr. Tahlil sir who sent us a message that you can went here and you can join the seminar. And the toppers of JKS which are from Quintessence classes gave us a lot of guidance that how can we compete in these examinations and how can we compete with the other students of outside the valley just studying in Delhi or outside the states. And they gave us a lot of knowledge. I'm very thankful for them. Thank you so much.